Hello everyone. So today we'll be doing stoichiometry. So इस लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे ऑन स्टडीइंग केमिकल रिएक्शंस, ऑन डिटर्मिनिंग क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो कोई भी एक सिंपल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, something like this. Let's look at the reaction of nitrogen plus hydrogen. This gives ammonia gas NH3. तो एक सिंपल रिएक्शन है, एंड जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं द फर्स्ट थिंग वी डू इज़ वी बैलेंस दिस। यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। सो अब ये बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और यहाँ भी 6 है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। सो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा दैट वी बैलेंस रिएक्शन टू कंजर्व मास। दिस इंश्योर्स कि जितना मास लेफ्ट साइड पे है उतना ही मास राइट साइड पे है, बिकॉज मास और मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। पर बैलेंसिंग रिएक्शंस का एक और सिग्निफिकेंस है। उसका सिग्निफिकेंस ये है, व्हेन आई राइट नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, एक्चुअली हमको ऐसे लिखना चाहिए, जस्ट टू बी क्लियर वी शुड राइट 1 हेयर। व्हेन वी डोंट राइट एनीथिंग हेयर इट मीन्स 1। सो इसका मतलब ये हो गया कि एग्जैक्टली एक नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 3 हाइड्रोजन to give 2 ammonia. In terms of reactants, 1 nitrogen molecule has to react with exactly 3 hydrogen molecules. If there are 4 hydrogen molecules, तो reaction नहीं होगा, तो complete नहीं हो पाएगा। अगर 2 hydrogen molecules है तब भी reaction नहीं होगा। For this reaction to happen this way, 1 nitrogen molecule needs exactly 3 hydrogen molecules. And it can only produce exactly 2 molecules of ammonia, because if it produces 3 molecules of ammonia or only 1 molecule of ammonia, then this reaction or the mass of this reaction is not conserved. Left or right side का mass different हो जाएगा. So जो balancing of the reaction है उससे अभी हमको ये समझ आ रहा है कि exactly one molecule of nitrogen will react with 3 molecules of hydrogen to produce exactly 2 molecules of ammonia. So this is something that is fixed, जो चेंज नहीं हो सकता। So इसका मतलब अगर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल नहीं है हमारे पास, मान लेते हैं अगर हमारे पास नाइट्रोजन का लेट्स से 2 मॉलिक्यूल्स हैं इंस्टेड ऑफ 1, लाइक इंस्टेड ऑफ 1 वी हैव 2 molecules of nitrogen. So that means instead of 3 we need to have 6 molecules of hydrogen, and instead of 2 we need to have 4 molecules of ammonia that are formed. So this 2 will react with 6 to give 4. Or more importantly, the ratio in which nitrogen and hydrogen react will always be 1:3, and the ratio in which ammonia is produced would be 1:3, and this would be 2. So the moment I say 2, this automatically becomes 6 and this becomes 4. तो दैट मीन्स अगर मैं आपसे कुछ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो अगर नाइट्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो यू शुड से कि 10 मॉलिक्यूल कैन ओनली रिएक्ट विद 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड दैट कैन ओनली प्रोड्यूस 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. सो we can summarize this, we can say जितने भी molecules react करेंगे आपस में to produce ammonia, the ratio of nitrogen, hydrogen and ammonia would always be 1:3:2. So because this ratio is fixed, that means अगर मेरे को तीनों में से किसी भी एक के moles पता है, जैसे it's not always necessary to start with nitrogen, जैसे मान लीजिए if this time I tell you I have let's say 9 molecules of hydrogen. If there are 9 molecules of hydrogen, this is 1:3, so this needs to be 3, right? And this is 1:3:2, मतलब जितना भी ये है ये उसका 3 गुना है, और जितना भी ये है ये उसका 2 गुना है. So this is 3, so this is 6. So as I said, एक बार आपने रिएक्शन बैलेंस कर ली तो उसके बाद ये रेशियो फिक्स हो गया. तो तीनों में से अगर मैंने आपको कुछ भी एक बता दिया तो यू कैन फिगर आउट कि बाकी उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, राइट? सो रेशियो इंपॉर्टेंट है. सो नाउ यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, अगर ये रेशियो इंपॉर्टेंट है
तो इंस्टेड ऑफ 2 molecules I can also say कि there are 20 molecules. तो अगर इसके 20 molecules है तो इसके कितने होंगे 60 और अगर इसके 60 molecules है तो इसके कितने 40 इसी रेशियो फिक्स्ड है ना. तो इतना तो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा यार 3 नंबर्स है इन द रेशियो ऑफ 2:4:7. तो अगर मैं तीनों नंबर को एक फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं 2x 4x 7x तीनों को x से मल्टीप्लाई किया the ratio will continue to be 2:4:7. So I can multiply these numbers which are in a fixed ratio by any fixed number. So I can also multiply this by, let's say, Avogadro's number. I can say this is 10 times n naught. So this is 30 n naught and this is 20 n naught. So 10 n naught N2 will react with 30 times n naught hydrogen to give 20 n naught ammonia. So n naught is just 1 mole. So here I can again say that we have 3 moles of nitrogen. It will react with 9 moles of hydrogen to give 6 moles of ammonia. So that means the ratio which is valid on number of molecules, since mole is just a number, is also valid on their moles. So I can say 1 mole of nitrogen reacts with exactly 3 moles of hydrogen to give 2 moles of ammonia. So what we said for molecules is also true for their moles. So in the ratio of moles will always be 1:3:2. So if this is clear, we can move ahead with understanding stoichiometry, determining quantities of reactants and products. So the summary here is that the reactants react in the ratio of their stoichiometric coefficients to produce products in the ratio of their stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficients here are 1, 3 and 2. So if I look at any other example here, let me look at one more example. Let's look at some other reaction. अगर हम किसी और reaction की बात करें, let's say the reaction is sodium plus sulfuric acid gives Na2SO4 plus H2. इसको अगर हम balance करें, we need to put 2 here. Now this is a balanced reaction. So अगर हम सिर्फ reactant side पे focus करें, तो looking at this reaction, I can say 2 atoms of sodium will react with 1 molecule of sulfuric acid. Or in terms of moles, I can say for every 2 moles of sodium that react, there will always be 1 mole of sulfuric acid. So this is what we can understand from these coefficients. Every 2 mole will react with 1 mole. So let's go back to the previous reaction और उस पे अभी हम एक question try करते हैं. So let me just erase what we have here and let's just start working on this reaction. ठीक है, I'll just erase everything. I'll just keep the reaction. So what we have is nitrogen and hydrogen. So let's look at a situation. तो अभी situation ऐसी है कि हमको बता रखा है कि let's say 14 grams or let me take a larger number 140 grams of nitrogen is provided to us. Okay, and the question that is asked is how much hydrogen does it react with. सवाल है कि अगर हमारे पास 140 grams of nitrogen है तो कितना हाइड्रोजन होगा. So that's the question here. So अभी हमको नाइट्रोजन की क्वांटिटी दे रखी है और हमसे पूछा है कि वो कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा. Based on these 1, 3 and 2, the only thing that we know right now is if there is exactly 1 mole of nitrogen, there will be exactly 3 moles of hydrogen. This is something that we know. So for every 1 mole there is 3 moles. So we know quantity of nitrogen. So we can figure out the moles of nitrogen. मैं formula लिख देता हूँ. Formula तो moles का हमको पता था. That is given mass by molar mass.
The moles of nitrogen that we have is mass of nitrogen divided by its molar mass. Nitrogen's atomic mass is 14, so 2 nitrogen atoms, so that is 28. So that is, we have 5 moles of nitrogen. For every 1 mole, there are 3 moles of hydrogen. So for every 5 moles, there will be 5 into 3 moles of hydrogen. This implies moles of hydrogen is 15. Right? I'll repeat. 1 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल्स है, तो 5 मोल नाइट्रोजन के 15 मोल्स है. Again, moles of anything is mass of that thing divided by its molar mass. Molar mass of hydrogen molecule is 2 because 2 hydrogen atoms. This means G, mass of hydrogen, is nothing but 2 into 15, which is 30 grams. So the answer to this question is 30 grams. I hope this was clear to everyone. Ki 140 grams of nitrogen would react with 30 grams of hydrogen. How we did that? We figured out how many moles of nitrogen are there, and then we said कि nitrogen के जितने भी moles है exactly 3 गुना hydrogen के होंगे. So उससे हमने पता लगाया कि hydrogen के 15 moles होंगे and 15 moles of hydrogen is 30 gram. So you can try finding the mass of ammonia that would be produced. You can try that. You can pause the video here and try it. I'll erase it in the meanwhile. So let's see. So let me solve the ammonia part. So now based on these coefficients, I know that for every 1 mole of nitrogen, again the same thing, for every 1 mole nitrogen, हमारे पास अमोनिया के कितने मोल्स होंगे? 2 मोल्स. अमोनिया के 2 मोल्स. तो नाइट्रोजन के मोल्स हमने अभी फाइंड करे थे. पिछली बार जो यहाँ पहले लिखा हुआ था, हमने देखा था नाइट्रोजन के 5 मोल्स है. तो अगर नाइट्रोजन के 5 मोल्स है, तो अमोनिया के कितने? 10 मोल्स है. 10 मोल्स ऑफ अमोनिया. तो 10 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो फिर से वही होगा, मोल्स ऑफ अमोनिया इज 10. दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास. अमोनिया कितना है? 14 प्लस 3 17. दिस इंप्लाइज G is 170. So there is one more way in which we could have done that, कि अगर हमको पता है नाइट्रोजन क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है, हमको क्वेश्चन में बता रखा है कि नाइट्रोजन जो है वो 140 है. अगर नाइट्रोजन 140, हमने फाइंड किया हाइड्रोजन जो है वो 30 है, तो ऑब्वियसली अगर रिएक्टेंट्स का टोटल मास इज 170, प्रोडक्ट का मास भी कितना होना चाहिए? 170. सो हम वैसे भी बता सकते थे. एक बार हमने ये और ये फिगर आउट कर लिया दैट अमोनिया इज 170 ग्राम्स. तो मूविंग ऑन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं. तो हमने एक रिएक्शन लिखी थी. वी हैड रिटन दिस रिएक्शन Na plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2. Let's do one thing. Let's look at a different reaction this time. एक different reaction को study करते हैं. Let's look at calcium carbonate plus HCl. This gives CaCl2 plus H2CO3. अगर हम इस रिएक्शन को देखें, और अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं लग रही है. यहाँ क्लोरीन इज 2 और यहाँ 1 है, सो हाइड्रोजन भी 2 है और यहाँ 1 है, so there will be a 2 here. So now this is balanced. So now I can say that for every 1 mole of calcium carbonate there will be 2 moles of HCl. So यहाँ जो stoichiometry है रिएक्शन का, वो ये है, for every 1 calcium carbonate there are 2 HCl. तो इसमें भी अगर हमको दे रखा है, लेट्स से क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर इज 50 grams of CaCO3, 50 grams. How much is the mass of HCl that will react with 50 grams of calcium carbonate? तो इसको भी ट्राई करते हैं सॉल्व करना. सो 1 mole will react with 2 mole. So given information is on calcium carbonate. So we try to figure out moles of calcium carbonate. Moles of calcium carbonate is mass divided by its molar mass. Now molar mass of calcium carbonate is, calcium ka mass is 40, carbon is 12, oxygen is 16.
So I'll write it here. It's 40 plus 12 plus 16 into 3. You will add this, you will get 100. So this is 100. I put this 100 here. So moles of calcium carbonate कितना आएगा 0.5. तो naturally अगर एक मोल के लिए 2 मोल है, so that means this will imply कि moles of HCl जो है that is twice of this, that is 1. So again I can say moles of HCl is equal to mass of HCl divided by its molar mass. And molar mass of HCl, again if I try to compute that, hydrogen is 1, chlorine is 35.5, so this is 36.5. So I'll put it here 36.5. So इसका मतलब mass of HCl is 36.5. So 50 grams of calcium carbonate reacts with exactly 36.5 grams of HCl. So as we saw, हमको बस एक reactant की information चाहिए, हम दूसरे reactant के बारे में बता सकते हैं because the ratio is fixed. Let's look at some other reaction. एक और reaction study करते हैं. So अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन या मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हम देखें, let's look at a reaction involving magnesium. So magnesium reacts with nitrogen to form Mg3N2. इसको देखते हैं. So this is the balanced reaction. This is Mg plus N2 gives Mg3N2. इसको अगर हम बैलेंस करें, so there will be a 3 here. तो बाकी बैलेंस है, यहाँ 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है. सो इससे हमको सीधा समझ आ रहा है कि अगर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है, they will react exactly with 1 mole of nitrogen to give exactly 1 mole of Mg3N2. Before we start, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, magnesium has a molar mass of 24 and nitrogen has a molar mass of 14. तो let's look at this. तो मान लीजिए इस बार हमको सवाल ऐसा दे रखा है कि there are let's say 7.2 grams of magnesium and the question is how many grams of nitrogen. ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया है और इसके बारे में पूछा गया है कि कितना Mg3N2 फॉर्म होगा. तो हाउ विल अप्रोच दिस क्वेश्चन इज, हम पहले फिगर आउट करेंगे नाइट्रोजन का कितना मास यूज हो रहा है. एक बार हमको पता लग गया नाइट्रोजन का कितना मास यूज हो रहा है, तो नेचुरली हमको इतना पता लग जाएगा कि लेफ्ट साइड पे टोटल मास कितना यूज हो रहा है. जितना लेफ्ट साइड पे टोटल मास यूज हो रहा होगा उतना ही मास Mg3N2 का प्रोड्यूस हो रहा होगा. सो द ओनली थिंग वी नीड टू फिगर आउट इज मास ऑफ N2. तो सबसे पहली चीज मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फाइंड कर लेते हैं. सो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम दैट आर रिएक्टिंग is given mass of magnesium, that is 7.2, divided by its molar mass, that is 24. That's 24. And if I calculate this, 24 into 3 is 72. This will be 0.3. So moles of magnesium are 0.3. So 3 moles react करेंगे 1 moles के साथ. So 0.3 moles of magnesium will react with 0.1 moles of nitrogen. So इसका मतलब moles of nitrogen are 0.1 and moles of nitrogen, moles of anything, is mass of that thing divided by its molar mass. Nitrogen का mass है 14, so nitrogen molecule का mass है 28, right? So I can say G is equal to 2.8. So mass of nitrogen is 2.8. 7.2 plus 2.8 is 10 grams, right? तो यहाँ 7.2 है, यहाँ 10 है, 2.8 है, तो टोटल 10 हो गया लेफ्ट साइड पे. सो 10 ग्राम अगर रिएक्ट कर रहा है, सो नेचुरली इट विल प्रोड्यूस 10 grams as well. So I can say Mg3N2 has a total mass of 10 grams that is being produced when 7.2 grams of magnesium reacts exactly with 2.8 grams of nitrogen. Let's look at one more reaction before we wrap up this lecture. So let's look at this very common reaction, formation of water. H2 plus O2
gives H2O and there. इसको बैलेंस करने के दो तरीके, आई कैन पुट अ हाफ हेयर और एक मोर कंफर्टेबल वे इज 2 nothing here, 2 4 hydrogen 2 oxygen and 2 oxygen. So if I look at this reaction, again the same thing, 2 moles of hydrogen will react with exactly 1 mole of oxygen to produce 2 moles of H2O. So अगर हम इसको देखें तो इसमें जो रेशियो है वो 2:1:2 है. So अभी भी सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, लेट्स से 7 grams of hydrogen is given to us and question is, if there is 7 grams of hydrogen, how many grams, like say x grams of oxygen. We need to figure out this x, like how many grams of oxygen will react with 7 grams of hydrogen. तो इसको सॉल्व करते हैं सिंपली, जैसे अभी तक क्वेश्चन किए. पहली चीज़ हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू फिगर आउट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज मास ऑफ हाइड्रोजन बाय इट्स मोलर मास, दैट इज 2. So we have 3.5 moles of hydrogen. So if we have 3.5 moles of hydrogen, we should have exactly half of those of oxygen, because ratio of moles of hydrogen is to oxygen is 2:1. So I can say moles of oxygen are 3.5 by 2. So these many moles of oxygen are there. So I can say moles of oxygen are 3.5 by 2. और सवाल होता है ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, हमको आंसर मिल चुका है, पर सवाल है ऑक्सीजन का कितना मास है. सो आई कैन से मास, आई कैन से दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. What is the molar mass of oxygen? Molar mass of oxygen is 16, molar mass of oxygen molecule is 32, so this will become 32. So when I try to solve this, ठीक है, अगर इसको solve करेंगे, so I can say this cancels, this is 16, so this implies x is 16 into 3.5, 16 into 3 is 48, 48 plus 8, so this is 56. So it will react with 56 grams of oxygen, so this x is 56. So मैं अगर यहाँ लिखूँ, this was 7, this was 56, so naturally this would be 7 plus 56, 63. So I hope this is clear how we figure out the quantity of this product using the quantity of both these reactants. तो अभी हमने जितने भी questions देखे, उस सब questions में ऐसा ही हो रहा था कि between reactants एंड प्रोडक्ट्स किसी एक चीज़ के बारे में हमको इनडायरेक्टली दे रखा था. अगर हम शुरू से देखें कि जो हमने सबसे पहली चीज़ आज डिस्कस करी, तो सबसे पहली चीज़ हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था. तो हमने कहा था कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव 2 मोल्स. तो हमको मोलर रेशियो पता था, तो उसके बेस पे हमने क्या कहा कि अगर किसी भी चीज़ के हमको मोल्स पता होंगे, किसी भी एक रिएक्टेंट का अगर मोल पता होगा, तो दूसरे रिएक्टेंट का पता लग जाएगा, बिकॉज देयर विल बी अ फिक्स रेशियो. एंड जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, वट एवर क्वेश्चंस वी सॉ टुडे, वेदर वी सॉ दिस क्वेश्चन जहाँ 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा था, और वेदर वी सॉ दिस क्वेश्चन जहाँ 7.2 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम दे रखा था, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको एक रिएक्टेंट के मोल्स तो बता दिए गए होते हैं. यूजिंग द फॉर्मूला फॉर मोल्स वी फिगर दोज मोल्स आउट. जब एक रिएक्टेंट के मोल्स हमको दिए जाते हैं, हम उस रेशियो से दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स पता करते हैं. एक बार हमको दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स पता लग जाते हैं, फिर हम फॉर्मूला लगा के उसका मास फाइंड करते हैं. सो इन ऑल द क्वेश्चंस टुडे व्हाट वी सॉ वाज लाइक हाउ टू फिगर आउट क्वांटिटी ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट व्हेन क्वांटिटी ऑफ द अदर रिएक्टेंट इज गिवन. So I hope this was clear to all of you. So in the subsequent lecture, what we'll do is we'll be studying about concentration of a solution, and uske baad we'll come back to these reactions. Thank you everyone.